नमस्ते जी, नमस्ते। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके पहले उसको देख लीजिए। We checked out section 5 which talked about transfer of property, and the core issue that we discussed here now, what exactly is it, falls under the transfer. That is why we have case laws to study. So in DU or in any 3 or LLB, this is precisely the formula that is followed. You taught the section and then you are asked now to understand what is going on inside of the section and how the court is reading it. Alright, so the first issue. अच्छा, सबसे जो सारी जो लड़ाई है जो आप अपने आंसर में भी मेंशन करके आएंगे, this word is conveys. So for example, last time around we discussed, what is conveyance? It is either creation of new title or new interests, also known as real rights in the English law. So, but what exactly is this in like real life situations? So first case, Sarin versus Ajit, Kumar, Poplai. The main question, and please, whenever you're writing your answers, especially for your semester examinations, just make sure that the examiner knows that you know what exactly are you writing, because fact they have read 10,000 number of times. So you start with now whether partition of a property falls under the section 5, that is transfer of property. Partition हुई है तो क्या मतलब आपको ट्रांसफर से कोई नए राइट्स मिले हैं, कुछ हुआ है? This is precisely to understand this we are taught this case of Sarin कि अब जी अब what falls under section 5. तो अब एक फैमिली थी जी, फादर थे, 2 सन्स थे, एज यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वैसे एक बेटी होती है बट यहाँ पे 2 सन्स हैं। अब इन्होंने जी पार्टीशन कर ली, ओके, ये फादर साहब को दे दो टोपी ऑफ आर झुग्गी, राइट, गिव दिस पोर्शन टू 1 son, गिव दिस पोर्शन टू 1 son. नाउ लेट्स नेम दिस गाय एज ए, अमरिंदर रख लेते हैं, मतलब सरदार जी बना लेते हैं एंड अमरिंदर रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। यार ये तो ऐसे बड़ी खराब से बन गए, डोंट नो सरदार जी नीड्स टू टेक ऑफेंस, इवन आई एम अ सरदार जी ओनली। ओके, अमरिंदर जी के पास जो हिस्सा आया दैट वाज ऑलरेडी हैड अ टेनेंट, तो किराएदार यहाँ बैठा हुआ था। ये सब तो अपना बैठ के ऐश कर रहे, हुक्का वुक्का लगा के आराम से, मैजिक कोल्स और आई रियली डोंट नो व्हाट ऑल इज देयर दीस डेज। नाउ दिस टेनेंट, सो बेसिकली अमरिंदर जी, व्हाट अमरिंदर जी डिड वाज ही फाइल्ड अ सूट फॉर एविक्शन ऑन बोनाफाइड नेसेसिटी फॉर पर्सनल यूज कि जी मेरे को अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, आप जाइए यहाँ से। सो व्हाट दिस टेनेंट सेड दैट बडी, this is a transfer. Basically you have acquired the property, so therefore it is a transfer, and therefore under section 14 subsection 6 of the Delhi Rent Control Act 1958, जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तब आप सूट ऑफ एविक्शन नहीं लगा सकते. So you have to mention this section, becomes important for your, and this is my very badly formed asterisk. Let me make a new good one. Yeah, better but not up to the mark. Okay, section 14 subsection 6 Delhi Rent Control Act 1958 में ये कहा गया है कि अगर ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर से मिल रही है तो आप सूट ऑफ एविक्शन बेस्ड ऑन दिस नेसेसिटी, which necessity, bona fide necessity for personal use, आप नहीं लगा सकते. So the question with the court was whether this property which has been acquired by, it's come to you by partition, means transfer. क्योंकि अगर transfer कोर्ट ने कह दिया कि yes it is a transfer, therefore suit of eviction इस requirement पे नहीं लगेगा. That's all that we need to understand from this case law. Alright, तो ये मैंने आगे यहाँ पे लिखा है कि अगर ये जो आपकी को-पार्सनरी प्रॉपर्टी जो आपको मिली है, अगर कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि दिस इज नॉट अ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 5 ऑफ द TOP, दैट्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देयरफॉर बेसिकली आप अपना सूट ऑफ एविक्शन कंटिन्यू कर लेंगे. अब इस केस में क्या खास बात हुई, डू मेंशन दिस इन योर आंसर, वेदर इट वाज द रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल और ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे ऑल सेड partition is not covered by section 5. So basically partition is not a transfer नहीं है rights का, it is a division of rights. So since a transfer did not happen, therefore जो आपका जो किराएदार था जो ये कह रहा था, since you have gotten it via transfer, therefore under the Delhi Rent Control Act you cannot put a suit of eviction on me. So what will Amarinder ji now do?
अमरिंदर जी इनका वैसे बाय द वे रियल लाइफ नेम नहीं था, आप फैक्ट्स अपने आप पढ़ेंगे इसके अपने केस में। आई यूजुअली डोंट गो इनटू फैक्ट्स, माय जॉब इज टू एक्सप्लेन द लॉ टू यू। फैक्ट्स तो मतलब आप खुद ही पढ़ेंगे ना, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल में कौन बढ़ा के बैठता रहेगा आपको फैक्ट्स, मतलब डिटेल वाले। ऑब्वियसली थोड़ा काम आप करेंगे, थोड़ा काम हम करेंगे। तो कानून के हिसाब से सिंस इट्स नॉट अ ट्रांसफर, सो अमरिंदर जी's सूट ऑफ एविक्शन कैन कंटिन्यू। ओके, अमरिंदर नहीं है इसका नाम, फिर से बोल रहा हूँ, बी केयरफुल व्हाट यू राइट in your answer sheets. Now we come to N. Ramaiah versus Nagaraj S. And this is a very funny story. Now basically we have two case laws back to back on a will. They are very similar yet they differ on one crucial aspect which is very confusing, but we can come to that. N. Ramaiah versus Nagaraj S. तो एक भाई साहब थे, was one भाई साहब. So the issue started basically, he had his wife as usual. We all have our wives, and his brother's son. So basically there was a nephew, very evil looking nephew made, very innocent looking wife made. So he expired. Okay, no worries, expired to be must. Then his nephew, basically his brother's son, and the wife were fighting कि मेरी है versus मेरी है। कौन मेरी है? मम्मी मेरी है। नहीं, property मेरी है। So nephew basically said that this guy, the guy who was expired, made a will in my name और उसके चक्कर में property मेरी है। बीवी जी कहती हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो मेरी है because the will is forged. Okay ना? अब हो गई लड़ाई शुरू। Okay. So what the nephew does is goes to court and says, gets an injunction and orders the wife to maintain status quo कि जब तक कोर्ट ये मैटर डिसाइड नहीं करता आपको ये बेच के कुछ नहीं आप करेंगे, कुछ भी नहीं आपने करना। ओके, but what the wife does is 6 months later, basically from this injunction, what the wife does is she makes a will in the name of her brother कि मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन तुम्हारा कैसे है, अभी तो लड़ाई चल रही है ना पीछे। But what happened was 3 months, so after that 6-month period, she makes a will, and after making the will 3 months down the line, she expires. So now लड़ाई किसके बीच में रह गई? Nephew, that's a brother's son, and wife's brother. Question is a will a transfer or an alienation under Section 5 of the Transfer Property Act? Now, if you remember from the previous video, the first and foremost thing was intervivos था among living people. So that was the case. अब यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है? इस बात की लड़ाई क्यों हो रही है? Because अगर इस बात की लड़ाई हो रही है तो याद है इसने इंजेक्शन ली थी यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन कराने के लिए, और वाइफ ऑफ द गुजरा हुआ आदमी ने क्या किया था? विल बना दी थी। अगर इसने विल को ट्रांसफर यस हो गया, कोर्ट ने यस कर दिया, सो शी हैज वायलेटेड दिस इंजंक्शन। तुमने आगे ट्रांसफर कैसे कर दी? तुम्हें बोला था ना मेंटेन स्टेटस को, तुमने आगे कैसे ट्रांसफर कर दी? सो द कोर्ट सेड यार इंटरव्यूज दे तो रखा है सेक्शन के अंदर बड़ा क्लियर, एंड विल क्या इंटरव्यूज होती है? इज इट बिटवीन लिविंग पीपल और वन पर्सन हैज टू डाई? दैट इज बेसिकली द गाय हु हैज मेड द विल, ऑब्वियसली। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ ट्रांसफर, सो देयरफॉर शी डिड नॉट वायलेट द इंजंक्शन। You see how beautifully law works. For one statute, remember, we were in the Transfer Property Act. Firstly, we had to consider Delhi Rent Control Act का एक statute कि अगर जी ट्रांसफर है तो आप मेरे ऊपर ये केस नहीं लगा सकते। तो वीएन सरीन में उसने कह दिया नहीं भाई साहब ये ट्रांसफर नहीं है, तो केस आगे चलेगा, सूट ऑफ एविक्शन चलेगा, which will be decided separate case on its own merits. Herein it is said that जी इंजंक्शन आप वायलेट कर रहे हैं कि नहीं? तो जी इंजंक्शन तो वायलेट नहीं हुई क्योंकि ये तो ट्रांसफर ही नहीं था। विल तो बनाने के लिए नहीं रोका ना किसी ने उसको कहा था कि बेटी ये जो है ये आगे प्रॉपर्टी दे मत देना किसी को। तो क्या विल इंटरव्यूज, जब इंटरव्यूज ही नहीं तो सेक्शन 5 के ट्रांसफर में कैसे आएगी? देयरफॉर नेफ्यू के साथ अब कौन लड़ेंगे? ब्रदर ऑफ वाइफ। सिंपल। नाउ वी फ्लिप द केस टू अबाउट you can say about 90 degrees, not 180 but 90. So this was the Karnataka High Court. Now we come to Delhi High Court. Kenneth Solomon versus
Dancing Bawa, dancing Bawa. Oh, that's a good pronunciation. Dancing Bawa. थोड़ा सा गंजा टाइप आदमी लगता है, शकाल टाइप, थोड़ा वो ऐसा लग रहा है कोई गुंडा है. Dancing Bawa. Anyway, devolution. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? Devolution of interests. What are interests? Interests तीन तरीके के हैं. So in English law they're called real rights, right? Just like I said, right to ownership, right to what? Possession and enjoyment of the property, and right to alienate. तीन type के interest हैं, which is very good. If you get this interest via will, now remember, यहाँ पे क्या लड़ाई चल रही थी? Is a will or a transfer? But यहाँ पे क्या लड़ाई चल रही है? Is a devolution of interest via will. So don't get confused. I know you will have a tendency to get confused because it's but natural that we all get confused. Even we get confused. ऐसा नहीं कि हम कोई विष्णु भगवान के 12वें अवतार हैं और यहाँ पे ये सब पहले से क्या है. थोड़ा सा लॉ को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना पड़ता है और 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, समझ में आ जाएगा. यहाँ पे बात हो रही है कि विल इज वेदर अ ट्रांसफर एलिनेशन, बट यहाँ पे बात हो रही है वेदर अ डेवोल्यूशन ऑफ एन इंटरेस्ट वाया विल इज अ ट्रांसफर. यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है. कौन सा इंटरेस्ट है? कोई भी हो सकता है. अब यहाँ पे कहानी क्या है अभी आप करते हैं. तो जी एक थे जी टेनेंट, साउंड्स लाइक एक था टाइगर टाइप ना. एक थे जी टेनेंट. तो टेनेंट साहब ने क्या किया? अगेन प्लीज इलैबोरेट द फैक्ट्स यूजिंग द केस मैट और योर द कीज और व्हाटएवर इट इज, बिकॉज थोड़े से फैक्ट्स अगर आप बढ़ाइएगा नहीं तो अगर इतने शॉर्ट आंसर लिखा है तो एग्जामिनर को पक्का लगेगा, कोई पढ़ता बढ़ाता तो कोई है नहीं आंसर, मतलब ढंग से एटलीस्ट, तो उसे लगेगा यार तो कुछ लिख के नहीं आया. तो थोड़ा सा तो लंबा चौड़ा करना ही पड़ता है. आपको ही पता है, मुझे भी पता. लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. द टेनेंट made a will. He bequeathed. What is bequeath? Is basically when you give someone via something via will to his heirs, whatever the pronunciation is. He expired, and since the lease was subsisting, because lease बची हुई थी, his आगे के successors they took over what? The possession. Now, the question was, is this giving of possession via a will a transfer under the Transfer of Property Act? The Delhi High Court said, yes it is. तो यहाँ पे हमारी क्या बात हो रही थी? Is a will a transfer alienation? One High Court of the another state is saying no. But यहाँ पे giving, or rather via will giving possession to the other person, is it? Yeah, I think the housefly was roaming around the camera. Anyway, I had to cut it. So whether giving such possession via will is a transfer, I could say yes, because it has the same effect as when you give someone transfer. Basically it's just like a sale only, कि आप आगे possession आपने आगे दे दिया. So they said yes. So therefore possession via will have the same effect as a transfer under section 5. So since it's a transfer and that is not allowed under the Rent Control Act, therefore this cannot be allowed, and eviction का सूट लगाओ और इनको बाहर फेंको. ये जो नए जो आए थे, अब समझ में आ गया. केनेथ सोलोमन वर्सेस डांसिंग बावा के अंदर क्या हो रहा है? डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट वाया विल. यहाँ पे सवाल हो रहा है, क्या पे था एन रमैया वर्सेस नागराज में, कि जी आपका इज अ विल अ ट्रांसफर? नो, बिकॉज विल इज नॉट इंटरव्यूअर्स. और यहाँ पे क्या बात हो रही थी? इज अ पार्टीशन अ प्रॉपर्टी दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय पार्टीशन, इज इट अ ट्रांसफर? इन अंडर वी एंड सरीन दे सेड नो. सो दिस इज प्रीटी मच 3 केस लॉज. आई थिंक आपके केस में एक 3 पेज का केस और है. आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट फॉर माई पर्पसेस. आई थिंक if they ask you like a 20 marker, elaborate on these 3 cases, you'll get 1. You'll get a 20. No, 20 तो नहीं मिलेंगे, 15, 16, whatever. तो जब आप कानून समझा कर आएंगे ना आप एग्जामिनर को, चाहे आप DU में, चाहे PU में, चाहे BHU में, anywhere, even in a 5-year LLB, जब आप कानून समझा के आएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा अरे बाप रे वाह, क्या आदमी आया है, देवता टाइप आदमी है,
Finally, someone has told us what we were looking for. Explain the law. Exactly what is the reason why in the bloody world are we studying these case laws? Quote the section, explain the problem, then explain the problem, the court's interpretation via case laws, of course. All right, take care, bye. So that's like one topic complete of section 5 from your case man. Then we'll move on. Transfer property act khatam kara dunga in another 2 to 3 weeks. If you've liked the content, then please do consider leaving a review on Google. It really helps us out. The link to everything is in the description. Right, take care, bye.